Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the lysogenic cycle of bacteriophages. So let's move to the glassboard. So life cycle of bacteriophages. So dear students, what are bacteriophages? So hopefully अब तक आपको बिल्कुल tips पे होगा. So bacteriophages are the viruses which infect bacteria. They are known as the bacteriophages. So in the previous lecture, we have discussed the lytic cycle. Clear? तो हमने बात की थी कि दो तरह के इनके लाइफ साइकिल्स होते हैं बैक्टीरियोफेजेस के. Number one is the lytic cycle. And then second one is lysogenic cycle. Clear? So lytic cycle जिसमें लाइसिस हुआ था, जो होस्ट सेल है यानी कि होस्ट बैक्टीरियम, उसके अंदर जब बैक्टीरियोफेजिस ने मल्टीप्लाई किया तो विद इन इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ 25 मिनट्स 25 मिनट के अंदर 200 कॉपीज बनवा दी और उसको लाइसिस की रप्चर कर दिया उसकी बैक्टीरियल वॉल्स को. एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल यूजुअली द टेक इज कॉल्ड द लिटिक साइकिल. अब दूसरा लाइफ साइकिल है, दैट इज लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. सो sometimes the phage DNA, phage किसे कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बैक्टीरियोफेज को कह रहे हैं. क्लियर? The phage DNA gets incorporated into bacterial chromosome. The phage in this state is called prophage. It's called prophage. क्लियर? ये प्रोफेज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. प्रीवियसली भी मैंने डिस्कस किया था. बजाय इसके कि अब वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो सेल मेटाबॉलिज्म को वो टेक ओवर कर ले और फिर उसके बाद उससे अपने बॉडी के पार्ट्स बनवाना शुरू कर दे, प्रोटीन्स और डीएनए. सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बैक्टीरियल जो फेज डीएनए है वो जस्ट इनकॉर्पोरेट होता है इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम और डीएनए, और उस बस it remains silent, it remains dormant or inactive. Clear? So the phage in this state is known as the prophage. Clear? And this process is called as, एक और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, that is lysogeny. The phage DNA gets incorporated into bacterial chromosome. क्योंकि ये जब 2 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी तो हमें ये चीज़ सारे उसमें मेंशन करनी पड़ेगी. सो इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इसका पार्ट है. जब फेज डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा यानी अटैच हो जाएगा, वो अपने आप को बाइंड कर लेगा किसके साथ, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ. इन दिस स्टेट द फेज इज कॉल्ड
जी स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है? प्रोफेज। अभी हमने पढ़ा प्रोफेज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइजोजेनी, एंड this process is called lysogeny. Clear? Dear students, there is another short question related to this life cycle of bacteriophages, that is, what is temperate phage? Temperate or lysogenic phage? Another short question, important short question actually. The phage which is present in lysogeny जो इस लाइजोजेनी इस प्रोसेस के अंदर मौजूद है, यानी प्रोफेज के तौर पर काम कर रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, जस्ट उसके साथ साथ वो रेप्लिकेशन हो रही है. द फेज इन द लाइजोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट फेज, इसको टेम्परेट फेज कहते हैं, और लाइसोजेनिक फेज. क्लियर? दैट इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन. इसी से जो कंपैरिजन में आएगा आपको, दैट इज व्हाट इज विरुलेंट फेज. विरुलेंट और लिटिक फेज. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक, इसी टॉपिक से रेलेवेंट. सो विरुलेंट डियर स्टूडेंट विरुलेंस से है, और विरुलेंस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, डिजीज कॉजिंग. क्लियर? सो द फेज means the bacteriophage which causes the lysis of its host bacterium is called virulent phage और lytic phage. क्लियर? तो इससे प्रीवियस साइकिल में, लाइफ साइकिल में, हमने जो लिटिक साइकिल था उसमें पढ़ा था कि वहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज है वो लाइसिस करवा देता है. याद है आपको 5वां स्टेप रिलीज वाला, तो उसमें वो लाइसिस बस्ट करेगा उसको बैक्टीरियल सेल को, और वहाँ से रिलीज हो जाएंगे. सो वहाँ पर बर्स्टिंग हो रही, लाइसिस हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है. सो ऐसा फेज जो अपने होस्ट सेल की लाइसिस करवा दे, दैट इज कॉल्ड एज विरुलेंट और लिटिक फेज. तो ये दोनों कंपैरिजन में आपसे पूछी जाएंगी. लाइसोजेनी पूछी जा सकती है, व्हाट इज प्रोफेज ये आपसे पूछा जा सकता है. आगे प्रोफेज का एक और आगे चल कर कंपैरिजन आएगा. अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, दैट इज इंडक्शन. दैट इज इंडक्शन. Under some environmental conditions, कुछ environmental conditions की वजह से, और spontaneously या खुद ब खुद ही, the prophage or the viral or the phage DNA, the viral DNA gets detached
from the bacterial DNA and enters into lytic cycle. This process is called induction. This process is called induction. Let me explain with the help of diagrams the lysogenic cycle. So that is the first step. आपको याद होगा previous lecture में भी. So that is landing in an attachment, adsorption, and here is what we called this phage is doing. Penetration, and here is the bacterial chromosome. Now it gets incorporated the viral DNA, it gets incorporated in the bacterial chromosome. So this has become the prophage. आपको याद होगा ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है. तो यहाँ पर हमने ऐड किया था, that is this is the first and second step, that is adsorption and penetration और इसमें क्या हुआ था, the phage the bacteriophage attaches to the cell wall or to the receptor on the cell wall of bacterium. Okay, so that is the first step. And here, the phage DNA or the viral DNA gets incorporated into bacterial chromosome. So here is the formation of prophage. तो यहाँ पर बन चुका है prophage. Clear? अब इससे नॉर्मली क्या हुआ था, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि यहाँ से आगे तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, द सिंथेसिस, यानी कि लिटिक साइकिल स्टार्ट होता है. लेकिन हमने बात की कि बाजू का हर दफ़ा ऐसा नहीं होता. समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ से जैसे प्रोफेज बना, इट एंटर्स इनटू अनदर स्टेट, अनदर साइकिल इज देयर. In this condition, there is a replication
यहाँ पे आप देख सकते हैं. So at this stage, the phage DNA replicates with bacterial DNA or chromosome before binary fission. यानी सेल डिवीजन होने से पहले, जैसे कि बाइनरी बैक्टीरिया में कैसे डिवाइड करता है, बाइनरी फिशन के जरिए. तो बाइनरी फिशन में सबसे पहले क्या होगा कि जो सा ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसका जो डीएनए है या क्रोमोसोम है जिसको हम कहते हैं, वो रेप्लिकेट होता है. तो उसमें बाइनरी फिशन होने से पहले ही ये प्रोफेज के साथ साथ ये भी रेप्लिकेट करेगा. ठीक है. सो बिफोर द बाइनरी फिशन, तो यहाँ पर फेज डीएनए देख सकते हैं, एक ये रिंग बना हुआ है, एक ये दूसरा रिंग. यहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर दो रिंग बने और दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये बन चुके हैं. नाउ व्हाट हैपन्स कि ये over here, now it has become incorporated. अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है बाइनरी फिशन का. ये दोनों ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं. इनके जेनेटिक मटेरियल उसी के साथ साथ चूंकि पहले ही रेप्लिकेट हो चुका था ये, तो ये भी साथ में, यानी कि दोनों, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में दोनों प्रोफेज मौजूद हैं. ठीक. और नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक द डायग्राम. और यहाँ पर हो चुकी है बाइनरी फिशन. सो बाइनरी फिशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स कि अ सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. अब यहाँ पर हर डॉटर सेल वो इन्फेक्ट हो चुका है, उसके हर एक के अंदर ये प्रोफेज मौजूद है. एंड हियर are the indefinite cell divisions. जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं मिल जाती एनवायरमेंटल, तब तक ये जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए वो करता रहेगा, डिवाइड करता रहेगा, तो उनके साथ साथ ये भी रेप्लिकेट और यही भी उसके साथ डिवाइड होते चले जाएंगे, क्योंकि अब इनके डीएनए के अंदर ये शामिल हो चुका है. क्लियर. एंड आफ्टर दैट हमने बात की थी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस, बाज़ औक़ात खुद ब खुद ही या फिर कुछ इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसिस की वजह से ये यहाँ से जो बैक्टीरियल जो वायरल डीएनए इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल डीएनए एंड इट एंटर्स इनटू द लेटेक्स साइकिल. ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन. सो हियर इज इंडक्शन. जब इंडक्शन हो गई तो अब इससे आगे तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा लेटेक्स साइकिल का. जस्ट एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँगा in order to let you understand how it enters into the latex cycle. तो यहाँ पर the third step has been started now, और यहाँ पर उसके वो DNA और उसके प्रोटीन के जो पीसीस हैं वो बनना शुरू हो चुके. So this is called as induction. Clear? So यहाँ पर देखें कोई तबाही नहीं मची, कोई यानी एज अ डॉर्मेंट जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता रहा बाइनरी फिशन के जरिए, वैसे वैसे ये भी उसके साथ प्रोफेज जो है वो भी उनके साथ साथ रेप्लिकेट करता रहा. सो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड एज द लाइसोजेनिक. दिस इज अ लाइसोजेनिक
life cycle. Clear? That is the lysogenic life cycle. और ये सारी टर्म्स उसी से रिलेटेड हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे सेपरेटली सिर्फ लाइसोजेनिक साइकिल पूछा जा सकता है या फिर सेपरेटली लिटिक साइकिल पूछा जा सकता है, यानी कि बाय नेम पूछा जा सकता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन ना हो, जस्ट उसमें ये पूछा गया हो आपसे कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, देन यू हैव टू ड्रॉ द बोथ डायग्राम्स, जो हमने प्रीवियस भी ड्रॉ की थी और ये वाली डायग्राम भी, मतलब इससे ऊपर जो लिटिक साइकिल था वो भी ड्रॉ करेंगे और ये लाइसोजेनिक साइकिल को भी ड्रॉ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस एज वेल एज सम वायरल डिजीजेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।